साई बंदगी जय सिया राम, गुरु को कीजिए बंदगी, प्रभु कोटि कोटि प्रणाम, किट न जाने ब्रिंग को गुरु कर लिया आप समान। देखने वाले तमाम सदस्यों को हमारी टीम की तरफ से आपके श्री चरणों में मेरा वारंवार प्रणाम। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ज्ञान वर्षा की टीम जो है वो काठियावाड़ी हॉल के अंदर मौजूद है। आज महाउत्सव हमारे पूज्य गुरु महंत 108 जीवनदास साहिब की तीसरी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य के अंदर सत्संग की आयोजित किया गया है। श्री सत्य कबीर सेवा समाज और वाघेला परिवार की ओर से आज की जो सत्संग का महा उत्सव जो रचाया गया है वो हमारे साथ जुड़े रहे। और देख सकते हैं अभी कुछ ही देर के बाद हमारी जो है वो सत्संग का वो जो है वो शुरू होने वाली है। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं गुरुजन, सत्संगी और संतों लोग का जो है वो आना शुरू हो गया है। और कुछ ही देर के बाद हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे। धन्यवाद। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की जय, धनी धर्मदास साहिब की जय, काशी लहर तारा धाम की, श्री हजूर उदित नाम साहिब की जय, श्री हजूर मुकुंद मणि नाम साहिब की जय, आचार्य गद्दी कबीर धर्म स्थान खरसिया की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आज आप सब पाकिस्तान कराची में सतलोकवासी महान जीवन साहिब की स्मृति में विशेष कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हम सभी सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले संत महान भक्त प्रेमी जन हैं। हमें सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए साहिब के उपदेशों को धारण करके अपना जीवन व्यतीत करना ये परम आवश्यक होता है। महान जीवन साहिब हमारे आचार्य गद्दी के कणिहार महंत थे और जितने उनके भक्त सेवक संत हैं उनकी सबकी जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने जो हमें कंठी दिया, सुमरन दिया, साधन दिया और हमें सद्मार्ग का उपदेश दिया, कैसे रहना है, कैसे खान पान करना है, कैसे सुमरन भजन करना है, कैसे आरती पूजा करना है। ये जो गुरु का उपदेश है उसको धारण करके ही चलना, तभी हम गुरुमुखी कहलाते हैं, तभी हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होती है अपने गुरु के प्रति। तो आज आप सब यहाँ उपस्थित हैं, आप सब के लिए ढेर सारी शुभकामना। हमारे गुरुजनों ने जो उपदेश और सतमार्ग बताया है उसका आप सब पालन करते रहना। और महान जीवन साहिब ने जो आप सबको सतमार्ग की शिक्षा दिए उन उपदेशों को हृदय में धारण करना और जीवन को संयम से, साधन से व्यतीत करना ही मानव धर्म माना जाता है। तो आज ढेर सारी शुभकामनाएं इस पुनीत अवसर पर जो आप सब यहाँ आकर महान जीवन साहिब की स्मृति में सत्संग, भजन, उनको श्रद्धांजलि स्वरूप उसको स्मरण कर रहे हैं। सभी प्रेमी जनों के लिए शुभकामना, लहरतारा धाम की ओर से शुभकामना, ढेर सारी शुभकामना। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की जय। साहिब बंदगी। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ श्रीमान हरिदास भाई है जो जीवनदास साहिब के पुत्र है और आज के उपलक्ष्य के बारे में हम दास भाई से पूछते हैं। साहिब बंदगी सब सेवा समाज, कबीर सेवा समाज को हमारा बहुत बहुत आभार और SS गाय वालों को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत परिणाम कि इस अवसर पे हमारे इन्होंने साथ दिया। और तो मेरी तरफ से सबको साहिब बंदगी और बहुत बहुत आभार। तो भाग भलो जागर संत पधारे, भाग भलो जागर संत पधारे। भाग भलो जागर संत पधारे, भाग भलो जागर संत पधारे। देश मरणा भव सागर तारे, देश मरणा भव सागर तारे। भाग भलो जागर संत पधारे, भाग भलो जागर संत पधारे।
भाग भलो जागर संत पधारे, भाग भलो जागर संत पधारे। देश मरण भव सागर तारे, देश मरण भव सागर तारे। भाग भलो जागर संत पधारे, भाग भलो। जैसे कि संत आवे तो आपरो भाग्य जागी जाए छे। आज संत ना दर्शन थई रह्या छे। भाग भाग भलो जागर संत पधारे, भाग भलो जागर संत पधारे। देश मरण भव सागर तारे, देश मरण भव सागर तारे। भाग भलो जागर संत पधारे। संत को आदर दीजे, आए आए संत को आदर दीजे, आए चरण पखाई चरण मत लीजे, चरण पखाई चरणा मत लीजे। भाग भलो जागर संत पधारे, भाग भलो जागर संत पधारे। उनके मुख की सुनिए बानी, उनके मुख की सुनिए बानी, उनके मुख की सुनिए बानी, उनके मुख की सुनिए बानी। तरक मिटे रे चोरा के खानी, तरक मिटे चोरा के खानी। भाग भलो जागर संत पधारे। ध्यान मूलम गुरुति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुरेवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु मूरत गति चंद्रमा, सेवक नैन चकोर, अष्टपहर निरखत रहूं गुरु मूरत की ओर। बोल सदगुरु महाराज की जय। आज की सत्संग समारोह सदगुरु श्री जीवन दास साहेब की वार्षिक तिथि के उपलक्ष्य में रखी गई है और आप आए हुए तमाम संत गुरुजन महंत प्रेमी जनों का श्री कबीर सेवा समाज बहुत बहुत आभार प्रकट करती है। और अब मैं सत्संग संभालने के लिए ये जिम्मेदारी हमारी कौम के, हमारी समाज के बहुत ही काबिल और बहुत ही प्रेमी और बहुत ही ज्ञानी ऐसे हमारे मैं कहूँगा कि कांति भाई जेठवा साहेब किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है। कांति भाई जेठवा साहेब आके ये माइक की अपनी जिम्मेदारी संभाले। आए हुए तमाम सत्संगी प्रेमियों से एक छोटी सी प्रार्थना ये करना चाहूँगा
कि गुरु श्री दयाल बापू जी ने 5 वधावे का उनको बोला था, तो उन्होंने 4 ही गाए। तो समय का ख्याल रखते हुए असल में प्रोग्राम तो जो है कि 1-1:30 बजे हमें स्टार्ट करना था, लेकिन आए हुए सत्संगी लोग जो है, क्योंकि सत्संग आप संतों से है और संत लोग जो है कि थोड़े लेट आए, तो समय का थोड़ा ख्याल रखते हुए मैं सबसे ये प्रार्थना करूंगा कि अगर एक भजन वाणी करें आप लोग, ताकि आए हुए जितने भी सत्संगी लोग हैं उन सबको गाने का अवसर मिले और समय का हम ख्याल रखें। तो कांति भाई से मैं प्रार्थना करूंगा आए और ये जिम्मेदारी संभाले। बोल सदगुरु देव की जय। जी महाराज जय। बोलिए दत्त गोरख नानक कबीर साहेब जय। बोले आओ तिल संत महंत गुरु जनोनी जय। मारा मोंगेरा वडीलजनों તેમજ પંડાલમાં ઉપસ્થિત સંતો મહેંતો ગુરુજનો, સત્સંગ પ્રેમીઓ, સમાજના વડીલજનો, સેવાધારીઓ, જો કે આજ આપણે બધા પરિચિત છીએ કે આજનો આ મહાન ભવ્ય ઉત્સવ શ્રી સત્ય કબીર સેવા સમાજના તરફથી पूज्य अति आदरणीय अति माननीय हमारा विवेकी संत शिरोमणि जेनो आ लोक थी विदाई थई, जे एक बहु जे दिव्य विभूति हता। कारण के संत जे छे धरती पर रहेवू ये हमारा माटे कल्पवृक्ष श्री कम नथी। एक साधारण जीवोना माटे संत ज कल्पवृक्ष रीते भगवाननी आ विभूति आ हम लोगों ने एक तोहफो छे, एक भेट छे। कारण के अहींया लखेलू छे के संत ना होत संसार में तो जल मरता संसार। ई कई आग थी? काम क्रोध मद लोभ मोह विषय विकार अहंकार मत्सरनी अहंकारनी आगमा अज्ञानतानी आगमा आ मनुष्य जीवन अमारू व्यर्थ थई जात। पण ईश्वरनी असीम कृपा देखो कि कदाच धरती पर बधा न पाए रहीने एक नो मार्गदर्शन करता एवे गुरु ने हमारा माटे मोकला। गुरु ना रूप में पोते अवतरित थया। गुरु ईश्वर का रूप है। जो भाव्य भाव तमारो भाव सत्य हो साचो हो तो गुरु ईश्वर का रूप है। वो गुरु के रूप में हमारे लिए मार्गदर्शन दर्शक बन के आए, जैसे अर्जुन के लिए सारथी बने थे। ऐसी दिव्य और संत शिरोमणि विभूति एक दिव्य आत्मा का यहां से जो है प्रसारण होना धरती से। एक संत गुरुजी आ संतनी एक तिथि से पुण्य तिथि से आप लोगों ने कहवानुं सत्य से पण जे एमनी सेवा छे एमना बाद एमने याद राखવું બે શબ્દોમાં એ આપણા પર ફરજિયાત છે જ। ભજન ગાવું બિલકુલ સત્ય વાત છે। ભજન એમના જ માટે રાખ્યા છે, તો આગળ આપણે ચાલતા ચાલતા એમના માટે એમની માનમાં જે થઈ શકશે આપણે વખાણ કરતા રહેવાના। એ વાત હવે હું સત્સંગ માટે મને અહીંથી આગળ આગ્રહ કરવામાં આવ્યો કે બાબુલાલ ભગત બિહારીજીને બોલાવો, પણ મારું એમ અંતરાત્માની ઈચ્છા છે કે કઈ વર્ષો બાદ એમને સાંભળવાનો અવસર મળશે। તો એવું છે કે થોડું આપણે માણસો હજી સંતજન સત્સંગ પ્રેમી પહોંચ્યા નથી, તો ભગતજીને અમને ગૌરવશી ત્યાં સુધી આપણે 1-2 સત્સંગીઓને પહેલે આપણે અહીંયા ઘણા બોલાવી લઈ। તો હું સત્સંગ માટે છગનભાઈ દેવજીભાઈ ચૌહાણને વિનંતી કરીશ કે મંચ પર પધારે અને સત્સંગને આપણે પ્રસ્તુતિ કરે, સંત મહિમા ગુરુ મહિમા કરે। ત્યારબાદ આપણે સત્સંગનું કાર્ય ચલાવું છીએ, એમાં ભગતજીને પણ વચમાં આપણે આમંત્રિત કરશી। બોલો સદગુરુદેવની જય। बोलो गुरुदेव।
सदगुरु गुणपति शारदा सदगुरु गुणपति शारदा अने तण नमवा शरणे गया सुरूप पूर्ण करे साहेब तुम्हारी सायरी अने सब घट रही समा मैं तेरे पार तो लाल न रही छुपा तो साहेब तुझ में यूं रसे अने ज्योति में तेरे ज्ञान की गाड़ी फिराई के तो फिर देख ले उसका खेल तो फिर देख ले उसका खेल बोले बोलावे सब घट बोले સેવાધારી લોક થોડું सी આગળ વાંહે ધ્યાન રાખજો સંત મહંત આવે હવે આપણે સત્સંગના કાર્યક્રમને પ્રસ્તુતિ માટે અહીંથી મને સંતો મહેંતોનો હુકમ સર આંખોમાં તેને જ્યારે સભા એક બનેલી હોય તો બહુ સારી સુંદર દિવ્ય વાતાવરણ સર્જાયેલું આજની સભામાં અને એમાં મને આ લાવો મળતો હોય કે કેવા વ્યક્તિ નહીં પણ વ્યક્તિત્વને
આમંત્રિત કરવાનો લાવો મને મળતો હોય, જે પોતાના આપમાં સત્સંગની પોતે એક ઇન્સ્ટિટ્યૂટના રીતે પણ એક પહેચાન છે. ઘણા બધા યુવક બાળકોને અથવા હમણે અમારી સત્સંગમાં જે નામ ધરાવે છે એ લોકોને પણ સંગીતની વિદ્યાથી ફળીભૂત કીધા. સેંકડો સત્સંગ કે સેંકડો ભજન ગાધા નહીં, ખાલી ફક્ત ગાધા નહીં પણ એને કવિત પણ કર્યા, ભજનોની કવિતાઓ પણ રચી, કમ્પોઝિંગ પણ કરી. સત્સંગની સત્સંગ રીતે માણી, એક કલાકાર રીતે ના માણી. 40-50 વર્ષનો સત્સંગનો એમનો સેવા, 40-45-50 વર્ષથી સત્સંગ માણતા એ વિભૂતિ, જ્યાં અન્નદાનો પાણી લખેલો હોય ત્યાં કરમવશ એ પહોંચ્યા, એ ધરતી પર ગયા. અમારી સત્સંગમાં તો એક ખાડો પડ્યો, અમારી સત્સંગને યાદી દઈને તો ગયા, પણ આજે અમે એટલા ભાગ્યશાળી છીએ કે એમને સાંભળવાનો લાવો આજે પણ અમને મળી રહ્યો છે. એ અમારી સત્સંગમાં ભજન સમ્રાટ રીતે પરિચિત થયા. માસ્ટર મોહનલાલ સંગીત વિદ્યાલયમાં પોતે પ્રાચીન શિષ્યોમાં, સંગીતના માસ્ટર મોહનલાલ સાહેબના શિષ્યોમાં, જે આજે માસ્ટર મોહનલાલના નામને જીવિત રાખેલ છે, એવી એક સંગીતથી પ્રેમ કરવાવાળી વિભૂતિ જે કેનેડા વ્યા ગયા. એટલા સુંદર ગાયક, અનુભવી વિવેકી ગાયક, આદરણીય માનનીય શ્રી हमारा वडील अनुभवी सत्संगी श्री बाबूलाल भगत जी ने हूँ एटली विनंती करीश कि एमनी सेवा ने मद्देनजर रखता है तारियों में एमने अपने गड़गड़ा बताविए. हूँ बाबूलाल भगत बिहारी जी ने विनती करीश के मंच पर पधारे અને આપને પૂરતી છૂટ છે દયાલભાઈ. અહીંયા બધાની ઈચ્છા છે કે આટલી દૂરથી પધારેલા હોય ને ખાલી એક ગૌરાવી તો આનંદ નહીં આવે, એમના સાથે ઇન્સાફ નહીં થશે. ભલે 2-3 ગાય, એમને છૂટ છે, મહેમાન છે આપણા અને એનો અનુભવ છે, એની સેવા છે. હું બધા ભાઈઓથી વિનંતી કરીશ હવે આપણે સેવાધારીઓથી કે ભગતજીને સાંભળવા છે. જેટલા શાંત વાતાવરણમાં સાંભળશે આપણને આનંદ આવશે. જોરદાર તાળીઓમાં વધાવવામાં આવે બાબુલાલ ભગત બિહારીજી. હું વિનંતી કરીશ કે આ જેટલી રજ છે ને સેવાધારીઓની પણ आप लोग भले 2 मिनट वास्ते बैठी जाओ पण वचमा संतो मेंतो ने एक विक्षेप थाय छे सांभळवा माटे एमने तरसे से बधाई. तो आपणे शांत रीते भाईओ बैठी जाओ अने सांभળી. जी गुरुजी मामाराव भगतजी कह रहे गुरुजी तमारो माइक तो गावानो ये अलग ज छे. भगतजी नु केवुं छे थोड़ो इको अने रिड्यूस करो, कम करो. बोलो सदगुरु देव की जय. भाई मेरा आवाज कम हो गया, जरा ठीक करना, इको नहीं करना. सर्वप्रथम आप संतों ने, मेहनतों ने, गुरुओं ने और नाना मोटा बहनों, मायों ने, दीकरीओं ने मारा वार वार 9 वर्षना नमस्कारी कबूल करते. ભજનનો તમે આગ્રહ કર્યો, મને હુકમ કર્યો ભજન ગાવાનો. આજકાલ મારા ઘરે લગ્નનો પ્રસંગ થઈ રહ્યો છે તો રાતના ઉજાગરા છે. તમે જો મારો અવાજ બેસેલો છે, 3 મહિનાની વિજા છે. હું ખૂબ ભજન ગાવાનો, ખૂબ જ ગાવાનો અને નવા ભજન બી લઈને આવ્યો છું, નવા વિશેષ બી લઈને આવ્યો છું.
પણ આજના પ્રસંગ વિશે મને બે વાત કરવાની આપ ઇજાજત દો. કેનેડામાં બહુ આનંદ, જે કાર, હર વસ્તુનું આપણે કહી નહીં શકતા, પણ આ વસ્તુ નથી, આ સત્સંગ નથી. આજે આ બીજી સત્સંગ છે મારી. પહેલી સત્સંગ હતી 100 ક્વાર્ટરમાં, ત્યાં બી બહુ આનંદ આવ્યો, અને અહીંયા આ વિભૂતિ મૂર્તિઓના દર્શન કરી મારું જીવન સફળ થઈ ગયું. પણ આજે જે પ્રસંગના જે ભજન છે એના વિશે હું બે વાત કરવાનું. સર્વપ્રથમ જીવનદાસ બાપુ. જીવનદાસ બાપુ બેંકના એક ઓફિસર હતા, સ્ટેટ બેંકના. જીવન બાપુ સ્ટેટ બેંકમાં ઓફિસર હતા અને હું નેશનલ બેંકમાં ઓફિસર હતો. જીવન બાપુ કેશ ડિપાર્ટમેન્ટમાં હતા. તેમને બધા અહીંયા જીવા કહીને બોલાવતા હતા. મારી પાસે બહુ કમ આવતા હતા, પણ મને જ અહીંયા જવું પડતું, કેમકે એ કેસમાં હતા તો કેસના મામલામાં મને આવું જવું પડતું. એક બીજી વાત બતાવતું. જીવન બાપુ ભલે શિરોમણી થઈ ગયા, કોઈને યાદ હોય અગર જૂના કાઠિયાવાડી હોય તો એ મારા બનેવી હતા. દેવજી, હું સાચું બોલું છું કે નહીં? બોલજે બેટા. મને હરીશે ફોન કર્યું કેનેડામાં કે મામા તમે સાંભળ્યું તમે આવી રહ્યા છો તો આ સત્સંગમાં તમે આવો. તો મને હરીશ તો નજર નથી આવી રહ્યો. બાપા તું મારી હાજરી ભરાવી દે, ભગવાન સુખી રાખે. કબીર સમાજને ચલાવવા વાળા, હું અગર ભૂલતો ના હો તો સર્વપ્રથમ કબીર જયંતિ જેલમાં થઈ હતી, સેન્ટ્રલ જેલમાં. તેના બાદ ઈદગાહ હોસ્પિટલમાં, તેના બાદ તાર ઓફિસમાં, પછી આવી ગઈ સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં. તો આ વ્યક્તિના જીવનદાસ બાપુના બારામાં બે શબ્દ બોલું છું. અવાજ મારો બેસી ગયો છો, મને માફ કરજો. બિંદુરામની એક પ્રશંસા છે, जीवन बापू ने अर्पण करूँ छूँ। भवसागर का रत्न वही है जिसमें कछु निर्मलता। अरे धन्य धन्य उस पुरुष को जिसका नाम जगत में चलता है। रामचंद्र श्री राघव ने इस जन्म में धर्म प्रकाश किया, कर्म वीरता दिखलाकर खल रावण वंश विनाश किया। केवट और भील और कपी कुल को प्रेम प्रथा से दास किया। अरे इसीलिए तो श्री राम नाम पर सबने विश्वास किया। केवल श्री राम नाम मुख से कहते ही मन से पाप निकलता है। अरे धन्य धन उस पुरुष को जिसका नाम जगत में चलता है। जन्म हुआ ब्रिज में श्री कृष्ण कन्हई काले का, कन सहारा कालिंद्र ना था, भेष बनाया ग्वाले का। करी धर्म की जीत और नाश किया अधर्म करने वालों का। इसीलिए सारे जग में आज यश छाया है बंसी वाले का। इन्हीं नामों से नरजीवन का वृक्ष फूलता फलता है। धन्य धन उस पुरुष को जिसका नाम जगत में चलता है। भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन जी सब याचकता हरने वाले थे। सत्य वचन को हरिश्चंद्र दशरथ पालन करने वाले थे। केवट, शबरी, हनुमान जी सब भक्ति भाव भरने वाले थे। पृथ्वी प्रताप, झांसी की रानी सब देश में मरने वाले थे।
इन्हीं वीरों को करते हुए से कछी भूमि भार टलता है। धन्य धन उस पुरुष को जिसका नाम जगत में चलता है। नर की शोभा और बड़ाई केवल धर्म नाम से होती है। आज जीवन बापू की जो जयंती हो रही है या मरण का दिवस हो रहा है, उनकी कीर्ति है। तो ये जीवन बापू के चरणों में मेरे 2 शब्द थे। अब विठल बापू की कुछ कहानी सुनाऊं मैं आपको। विठल बापू जब उनको कनाडा में पता चला कि मैं भी आ गया हूं, उनके बेटे रमेश की बहू मंजुला, अब आपको क्या बताऊं, क्या पता कि मंजुला और मेरी बहू यानी मेरे प्रभात की बहू पूजा, वो दोनों सहेली, उनको नंबर मिला, उन्होंने फ़ोन किया तो मंजुला ने कहा बापा हूँ जाऊँ છું મારી સહેલી મળવા। तो भाई कौन से કે બાબુલાલ મામાના ઘરે જે છે એના છોકરા, તો કે બાબુલાલ અહીંયા છે, ચાલો મને હું બી ચાલું છું। વિઠ્ઠલ સાહેબ બહુ પૂરા કબીર સમાજના એ જ ડ્રેસના સાથે એ લોક બ્રમ્પટનમાં રહેતા હતા અને હું મિસિસાગામાં રહેતો। ત્યાં આવ્યા મારા ઘરે, મને ખબર પડી વિઠ્ઠલ સાહેબ, શાયદ તમને ખબર છે કે નહીં, અહીંયા એટલા અમે નહોતા મળતા। આ મારા 2 અલ્ફાઝમાં સમજી જાજો તમે। ત્યાં ભાગીને આવ્યા, મારા ઘરવાળાએ બચ્ચા લોકો બહુ સન્માન કર્યું। 10 વર્ષ સુધી અમે સત્સંગ કરી છે। ભાઈ 1 મહિનો થાય મને ફોન કરે, એટલે બાપા હું હવે બોર થઈ ગયો છે યાર, તું બોલાવ મને। તો ભાઈ એ પોતાનું હાર્મોનિયમ લઈને આવ્યા, હું મારા તબલા લઈ વિઠ્ઠલ સાહેબના સાથે 10 વર્ષ સત્સંગ કરી છે। એની જ્યારે તબિયત ખરાબ થઈ, એક જ વસ્તુથી ખરાબ થઈ, એનું જે આંખનું જે ઓપરેશન કર્યું હતું એમાં ડિફેક્ટ રહી ગયો, જેની વજહથી એની તબિયત ખરાબ થઈ। રમેશે મને ફોન કર્યો કે મામા મારા બાપુની તબિયત ખરાબ છે, બાપુ તમને બોલાવે છે। મારા પ્રભાત સાથે મેં કહ્યા કે ભાઈ તું મને ભજન સંભળાવ। મેં કહ્યું બાપુ શું થઈ ગયું ભાઈ? હું એમને બાપુ જ કહી રહ્યો છું। રમેશ કહે છે કે 2 દિવસે જમી નથી રહ્યા। મારી બૈરીએ એને આગ્રહ કર્યું કે તમે અગર જમશો નહીં તો અમે ભજન બી નહીં કરો, અમે પાછા ચાલી જાવશું। મારા કહેવાથી બાપુએ જમ્યું પેટ ભરીને અને 1 ગ્લાસ પૂરો દૂધનો પી ગયા, પણ એમની તબિયત ધીરે ધીરે ખતમ સ્લો થવા લાગી। અને હું તમને બતાવું હાલતા ચાલતા ગયા છે। દેખો આ સત્સંગનો પ્રતાપ છે। અને એમનો છોકરો રમેશ, દિનેશ, એમનો જમાઈ જયંતીલાલની વહુ માલા, જેને અમે ઝીણી કહી છે, અને એક એની વહુ મંજુલા અને અનિતા, આ 2 વહુએ વિઠ્ઠલ સાહેબની એટલી સેવા કરી છે, એટલી સેવા, કેનેડામાં રહી કરીને સેવા કરવી સવાલ જ નથી પેદા થતો। એ બચ્ચાને ધન્ય છે એવી સેવા કરી। અને એ ટાઈમમાં કોવિડ શરૂ થઈ ગયું હતું। રમેશ કહેવા લાગ્યા કે મામા અને મારા બાપાને હોસ્પિટલ, મેં કહ્યું ભાઈ હોસ્પિટલમાં લઈ જાશો, બધા માણસ મરી રહ્યા છે અને લાવારસીમાં ફેંકી દેશે। તો રમેશ કીધું કે આ તબિયત ખરાબ છે। મેં કહ્યું ઘરે બોલાવો, यहाँ कने अपने इमरजेंसी कॉल करो, फौरन घरे डॉक्टर आवे, घरे इलाज, डॉक्टर के इसको हम ले जाएंगे भाई, ये इधर ही इलाज नहीं होगा उसका। भाई लई गया, पाछो ठीक थी गयो, पाछा आवी गया, पाछी तबीयत खराब थी। रातना 5 वागे पोते ऑफ थी गया, सवारना प्रभातना पोरमा
यहाँ 12 दिन बल्कि 15 દિવસ સત્સંગ વિઠ્ઠલ સાહેબની મેં કરી છે यहाँ કને અને વિઠ્ઠલ સાહેબના અનુયાયી જે કબીરબંધથી આફ્રિકાથી આવ્યા, અમેરિકાથી આવ્યા, લંડનથી આવ્યા, કેનેડાના વેનકુવરથી આવ્યા, કેલગરીથી આવ્યા અને વિઠ્ઠલ સાહેબની यहाँ બી તેવી એટલી પ્રશંસા છે હું તમને બતાવી નહીં શકતો. તો મારું ધર્મ છે કે એવી હસ્તીઓના બારામાં આપ લોકોને ખબર નહીં જે અમારા સાથે અહીંયા આગળ રહી બહુ સત્સંગ કરી વિઠ્ઠલ સાહેબ સાથે. હવે હું સત્સંગ કરવાના માટે એકલો રહી ગયો છું. આપણા માણસો ઘણા છે પણ ભાઈ બધા કેનેડિયન બનેલા છે. બીજું તમે ભજનનો આગ્રહ કર્યો, મેં કબૂલ કર્યો. મારો અવાજ બેસેલો, અમારા ઘરે લગ્ન છે મારા પોતરાના, આપ લોકોને ભાવભીનું આમંત્રણ છે. તો હું અહીંયા 3 મહિના છું, પછી ખૂબ સત્સંગ કરીશ, આપ લોકોને ભજન બી સંભળાવીશ. પણ આજે મને માફ કરો આપ ગુરુ લોકને. બોલો સદગુરુદેવ કી. આભાર. હવે હું બાબુલાલ સોમજી વાઘેલા સાહેબ અમારા વચ્ચે બેસેલ છે, એમને વિનંતી કરીશ કે આવે ને ગુરુ મહેમા કરે. બાબુલાલ સોમજી વાઘેલા પછી હરદાસભાઈ તૈયાર રહી. आग लगी आकाश में जड़ जड़ पड़े अंगार, आग लगी आकाश में जड़ जड़ पड़े अंगार, संत न हो संसार में जल मरता संसार, जल मरता संसार। आपा तजे हरि भजे नक्षिक तजे विकार, आपा तजे हरि भजे नक्षिक तजे विकार, सब जीव से निर्भय रहे साध मता साध, साध मता साध। सतगुरु की मेहमान अनंत है, आनंद किया उपकार। सतगुरु की मेहमान अनंत है, आनंद किया उपकार। अनंत लोचन उगारिया आनंद दिखावनहार, आनंद दिखावनहार। सतगुरु के संत पू, संत के गुरु पू। सतगुरु के संत पू, संत कहे गुरु पू। आवन सावन पूजिता अगम की गई सूर, अगम की गई सूर। संतो बंतो बाबूलाल भाई भगत सत्संग तो बोली रह्यो छो। मारी आदत छे जे भी हूँ गाऊं भजन गाऊं छू तो हूँ सत्संग थी हाथ जोड़ीने विनती करूं छू। अगर कहीं मारी भूल चूक थी जाए तो મને क्षमा કરી દેજો। आया क्षमा કરી દો। આ સંત નો ગુરુજन ની मंडली बैठी थे, आप सत्संग कर क्षमा करी दे तो पारी परम परमेश्वर सच्चिदानंदी मने क्षमा करी दे। बोल सतगुरु देव की जय। तब का बया बैरागी, तब का बया बैरागी। आनंद ले लागी कबीरा, तब का बया बैरागी, तब का बया बैरागी।
अंधकार में कहीं नहीं सूझे, नौता गुरु नौता चेला, नौता गुरु नौता चेला। अंधकार में कहीं नहीं सूझे, नौता गुरु नौता चेला, नौता गुरु नौता चेला। अले સત્સંગી બાબુભાઈ સોમજીભાઈ વાઘેલા આપનો ઘણો ઘણો આભાર. બહુ સત્સંગમાં દિવ્ય વાતાવરણ સર્જાયેલો. આ જ વાતાવરણને આપણે અનુલક્ષીને સત્સંગને જાળવી રાખવી છે. હવે હું વિનંતી કરીશ અમારે હરદાસભાઈ જીપ્સી, તમારથી વિનંતી કરીશ કે મંચ પર પધારો, આપ ગુરુ મહિમા કરો. એના પહેલે हमारे वडील गुरुजी मोजीराम बापू कांची बापू राठौड़ आया विराजित है. एमनी कांई इच्छा से बे शब्द कांई बोलवानी, तो आपणे एमने सांभળી लई. लगभग जरा ध्यान राखो गुरु लोगो, महात्मा जी छगनदास बापू, आप तो आ विवेक करता नहीं पण कोई करे एने तो सांभळो विवेक ने. जरा शांत राखो. અહીંયા હમણાં એક વાણી થઈ કબીર સાહેબની, એટલે એ ભાઈ તારે ઢોલક બંધ કર કે બસ તું નીચે આવી જા. અમે સત્સંગમાં મચ્છર મારવા નથી આવ્યા બેટા, કાંઈ સમજવા આવ્યા છે. અહીંયા બાબુલાલ ભાઈ વાઘેલાએ વાણી કરી, ઘણી વખત એમથી સાંભળું છું કે સત્સંગ મને માફ કરજો. સત્સંગ તો માફ કરવા વાસ્તે જ બની છે. કુદરતવાળી દયા છે કે સત્સંગ દયાનો સાગર છે. બનતા કોશિશ તો આપણે માફી લેવાથી પહેલે શબ્દોને સુધારીને પછી આગળ હાલવું જોઈએ. સત્સંગનો પ્રભાવ તો આ છે. હવે હું આ જ વાણીના બારામાં બધું તો ઘણું બધું ગડબડ છે આની અંદર. તો ભાઈ ખાલી એક જ વાત કહું કે મહાદેવ જી કા જલમ ભી નોતા, તેદન કા ભેખ હમારા કબીરા, તબ કા ભયા વૈરાગી. બસ મારે આટલું જ સમજવું છે. આ સંત લોકો જેટલા કબીરપંથી છે ને, મને સમજાવો કે જે મહાદેવ મહાદેવ એટલે ભોલાનાથ, જેને શિવ મહારાજ કહે છે, એ નહોતા તો ન્યા કણ કબીર સાહેબ ભેખ લીધો. તો આ વાત સાચી છે. તો સર્વે કબીરપંથી લોકો મને જ્યારે મહેરબાની કરી સમજાવો, કારણ કે હું તમારો બધાનો દાસ છું, કબીરપંથી નથી, હું ગુરુપંથી છું. ઓર મને તમારા બધામાં મારો ગુરુ દેખાય છે એટલે ભીખ માંગી છે. જય ગુરુ મહારાજ. सबसे पहले तो कनाडा से आए हुए बाबूलाल भगत जी से बंदगी साहिब बोलूँगा. उसके बाद यहाँ बैठे हुए नरोत्तम दास साहिब को मैं बंदगी साहिब बोलूँगा. और जितने भी संत महात्मा यहाँ बैठे हैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बंदगी साहिब. साहिब की एक साखी से शुरू करूँगा और एंड भी साहिब ने चाहा तो उसी पे करूँगा. कहते हैं कि पानी से नहीं हुआ पैदा, श्वासा का नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं ताका नाम कबीर. जब कुछ भी नहीं था, साहिब कहते हैं. और धर्मदास बोध सागर में कबीर साहिब ने बड़ी सफाई से बड़े आसान लफ्ज़ों में समझा दिया है कि जब कुछ भी नहीं था मैं एक प्रकाश की सूरत में था. ना आत्मा थी और ना परमात्मा था, कुछ भी नहीं था, मैं एक प्रकाश की सूरत में था. और प्रकाश ही प्रकाश था जिसे सतलोक कहा जाता था. उसके बाद ये सृष्टि का निर्माण हुआ, 16 अंश का निर्माण हुआ साहिब के. और उन 16 अंशों में निरंजन का, आदि शक्ति का निर्माण हुआ. और आज हम इस 3 लोक के संसार में बैठे हुए हैं. अब मैं एंड करूंगा कि साहिब कहते हैं कि 3 लोक में निरंजन, 3 लोक में निरंजन, तुम उसके गुण गाओ, वो प्रभु कोई और नहीं, उसको जान ना पाओ. बोल सदगुरुदेव की जय. महादेव એટલે ब्रह्मा विष्णु और महेश. ये
तीन गुण है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीन गुण है, रजो सतो और तमो। ये तीन गुण के आधार, लेकिन तीन गुण से वो जो निर्गुण है वो न्यारा है। तीन गुणों से जो निर्गुण है वो न्यारा है। ये भेद जो कबीर साहब कह रहे थे कि महादेव का जन्म भी नहीं था, महादेव यानी ये तीन गुण भी उत्पन्न नहीं हुए थे। तीन गुण का कोई वास नहीं था कि आद एक सत प्रकाश नहीं था, पांच तत्व तीन गुण का वास नहीं होता, ज्योति स्वरूपी 10 अवतार, इंड पिंड ब्रह्मांड नहीं था। तो क्या था? सत का प्रकाश। और सत का प्रकाश क्या है कि आदि, देखो सनत किसकी नहीं है, ये जीव की कोई सनत ही नहीं है, ये आत्मा की कोई सनत ही नहीं है कि कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कैसे उत्पन्न हुआ है, क्योंकि ये आत्मा स्वयं ही है, स्वयं यही अनादि, यही इसी का भेक है। ये जो भेक है, कौन सा भेक लिया कबीर साहब ने कि मैं तो आदि अनादि हम हंस है, आदि अनादि हम हंस है, वो आदि अनादि है, वो उसको तो साहेब ने उस बात को जाना है कि ये जो आत्मा है ये अनादि से है, इसका कोई सनत नहीं है, कोई इसकी पैदाइश नहीं बता सकता है ना कोई, क्योंकि आत्मा ही तो परमात्मा है और परमात्मा का कोई जन्म भी नहीं है ना। वो तो तीन गुणों से न्यारा है। जो देखो सो तीन में देखा, जो देख रहा है संसार तीन में ही देख रहा है ना। तीनों की पूजा हो रही है, तीनों की सेवा हो रही है, पर चौथे को कोई नहीं जान रहा है। जो देखा सो तीन में देखा, चौथा दर्शिया ना कोई, चौथे को जो जानेगा तो संत कहाएगा सोई। बोल सदगुरुदेव की जय। અમારા માટે સંત એટલે સમજો પારિબ્રહ્મ પરમાત્મા સામે હોય તો બધુંય નિકટ જ છે। દયાલ સ્વામીની જ વાતને લઈને, ગુરુજીની વાતને લઈને થોડા સાહેબનું જ કહેવાનું છે। 10 અવતાર સતગુરુ કા ચેલા કહે કબીર, ગુરુ આપ અકેલા। એટલે આ પૂરા સત્સંગ પંડાલના અંદર આપણે જેટલા બી બેઠા છે આપણે બધાય ગુરુવંશી છે, આપણે બધાય ગુરુવંશી છે। રહી बात फकीरी की, फकीरी भेक फकीरी, ये वो फकीरी नहीं है। आज संत लोग જેટલા બિરાજમાન છે, સંતોનું કહેવાનું છે કે ભાઈ આ ઈ ફકીરી નથી, હાથ મેં 10 કુંડલ, બધું આવું આપણે આ ચીજને સમજી છીએ। સાહેબ ફકીરી સિર્ફ જ્ઞાન ફકીરી, भेक फकीरी सब कोई लेवे, ज्ञान फकीरी पंथ जीना, ज्ञान फकीरी नाम फकीरी। सर्वे संतों एक ही बात करी कि नाम फकीरी अतल बादशाही। तो जीवे आ फकीरी नामनी लई लीधी से એને કોઈ ભેખ લેવાની જરૂરત નથી, જ્ઞાન ફકીરી। જય સદગુરુ સાહેબ, ક્ષમા કરજો। બોલો સદગુરુ ભગવાન की जय। મારા સંતોથી, મારા વડીલોથી કોઈ હું ઉપદેશ કરવા નથી આવ્યો અહીંયા, લેકિન રતિલાલ સાહેબ સભા લાગેલી છે और વિષય પણ એવો જબરદસ્ત વિષય છે કે મહાત્મા કબીર એ પોતાને એવી વાત કરી છે કે હું બધાયથી પહેલા, મારાથી પહેલે કોઈ નહીં। આવો એક પ્રસંગ રાખેલો છે, તો કોઈ નાની વાત નથી, આ સમજવાના लिए બહુ મોટી વાત છે। और ક્યારે આવો પ્રસંગ આવે ત્યારે જ ઊભા થવું જોઈએ, નહીં તો હર આદમી પ્રશ્ન કરે તો પ્રશ્નના लिए ઊભા ન થવું જોઈએ। કારણ કે ઘણા માણસો પોતાની અટેન્ડન્સના लिए પ્રશ્ન કરી દે છે, સમજવાનું નથી હોતું, પણ પોતાની અટેન્ડન્સ કે હું અહીંયા આવ્યો છું તો કોઈ પ્રશ્ન કરી દે તો એટલે મારી હાજરી લાગી જાય। તો કાંઈક માણસો એવું પણ કરે છે, લેકિન પ્રશ્નને દેખવું જોઈએ કે વાકઈ आज जो हमारा वडील श्रीए जो प्रश्न કર્યો છે તો જેવો તેવો નથી। महात्मा कबीर साहब ने એવી વાત કરી દીધી છે, તો આજ हमने એ વાતને સમજવી બહુ જરૂરી છે। કારણ કે જો કબીર સાહેબે કીધું એ તો સત્ય છે, એમાં કોઈ પણ
દાગ નથી, મીન મેખ નથી, સત્ય છે. જો વાત મહાત્મા કહી દઈ એટલે સત્ય છે, પણ જાણવું આપણાને છે કે એના વાહે રહસ્ય શું છે. કેમ એટલી મોટી વાત કરી દીધી કે બધાથી પહેલે હું, કેમ કે આજ જો અમે પરમાત્માનું નામ લઈ રહ્યા છે, પરમાત્મા કહી દો, ભગવાન કહી દો, બ્રહ્મ કહી દો, આ કેને નામ રાખ્યા? આ અમે નામ રાખ્યા એને જાણવાના લીએ કે પરમાત્માને કેવી રીતે અમે ઓળખીએ. પરમાત્માને કોઈ જોયો નથી આજ સુધી, લેકિન એનું નામ એને જાણવાના લીએ કોઈ નામ તો રાખવું છે ને. બ્રહ્મ સર્વવ્યાપક છે ભાઈ, તો એને એ હિસાબથી, કેમ કે પરમાત્મા વ્યાપક છે, તો એને એવી રીતે અમે જાણવાના માટે કે એને જાણવો છે તો અમે નામ રાખ્યું. નાનક, ગોરખ, દત્ત, કબીર, આ નામ કેને રાખ્યા? એના માતા પિતાએ રાખ્યા. આ નામ માતા પિતાએ રાખ્યા. લેકિન સાહેબ કબીર કહે છે કે હું તો ત્યારનો છું, મારું કોઈ નામ નથી, હું તો ત્યારનો છું કે જ્યારે આ સંસાર પણ નહોતું. તો એ કેમ ખબર પડે અમને કે સાહેબ કબીર સત્ય કહી ગયા છે? એને તો સત્ય કીધું છે, લેકિન અમને કેમ ખબર પડે કે સાહેબ કબીર એ વાત એટલી મોટી વાત કહી દીધી? તો સાહેબ આ અમારી એક સાધના, જ્યાં સુધી અમે એ સાધનાને નહીં જાણવાના ત્યાં સુધી કબીર સાહેબની વાતને પણ અમે નહીં જાણવાના. ચાહે નાનક સાહેબ હોય, ગોરખ સાહેબ હોય, દત્તાત્રેય સાહેબ હોય, કોઈ પણ મહાત્માની વાતને અમે સમજી નહીં શકવાના, કારણ કે અમે એ જો એની જે પગદંડી છે એને જાણતા નથી, અમે એની ABCD અમે જાણતા નથી. તો અમને જાણવું બહુ જરૂરી છે કે સાહેબ કબીરે કીધું કે આ સંસાર નહોતું, બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ પણ કાંઈ નહોતા, ત્યારનો હું વૈરાગી છું. તો એ વૈરાગી અમને કેમ ખબર પડે? અરે જ્યારે અમે ઉતરવાના પોતાના અંદર, જ્યારે સાધનાઓ દ્વારા જ્યારે અમે અંદર ઉતરવાના, ત્યારે વાત અમને સમજમાં આવશે કે સાહેબ કબીરે શું કીધું છે. કારણ કે સાહેબ કબીરે બહાર તો નથી વાત કરી ને, પોતાના ઘટ ભીતર જાણી કાઢીને એ વાતને સમજાવવાની કોશિશ કરી છે કે અરે હું તો ક્યારનો છું, હું આજનો નથી, હું તો અનાદિ છું હું. લેકિન ક્યારે? જ્યારે અહમ પોતાને જાણ્યું, જ્યારે પોતાને જાણી લીધું ત્યારે ખબર પડી કે હું કોણ છું. હું તો એ જ પારિબ્રહ્મ પરમાત્મા સ્વયં આપ છું. તો હવે બતાવો આનાથી મોટી વાત ઓર કઈ થઈ શકે છે જો સ્વયં આપને જાણી લે? અરે જ્યારે સ્વયં આપને જાણી લે તો એ માણસ આવી જ વાત કરશે, કારણ કે પોતાને જાણી લીધો, પરમાત્માને જાણી લીધો, સદગુરુને જાણી લીધો, તમામ પૂરી કુલે કાયનાતને જાણી લીધી. જ્યારે એને જાણવાના બાદ પછી કાંઈ જાણવા જેવું રહેતું નથી, કાંઈ વાત રહેતી નથી, કારણ કે એને જાણી લીધું. જેના ત્યાં પૂરી કાયનાત સૃષ્ટિ બનેલી છે, જ્યારે એને જાણી લીધું તો પછી એના જાણવાના બાદ બીજું કાંઈ રહેતું નથી. બોલો સદગુરુ ભગવાનની જય. तो कबीर साहब ने जो बात करी है वो जानकर करी है, वो अपने योग की, अनुभूति की और अपनी भक्ति की थी, जिसके अंदर उन्होंने उसको प्राप्त किया है. महात्मा शंकराचार्य प्रभु बताते हैं कि उस परम तत्व को जानने के लिए कर्म से 16 अंग, कर्म से 15 अंग जिनका आपको विश्लेषण करना जरूरी है. अगर आप उस कर्म से 15 अंग का विश्लेषण नहीं करेंगे तो उस परम तत्व को नहीं जान सकते. वो कर्म से 15 अंग जो है वो महात्मा शंकराचार्य बताते हैं: यम, नियम, त्याग, मौन, देश, काल, आसन, मूल बंध, देह की क्षमता, नेत्रों की स्थिति, धारणा, ध्यान, समाधि. तो ये कर्म से 15 जय, तो कर्म से 15 अंग बताए हैं, जिसका विश्लेषण करके ही वो कबीर अपने आप को जाना है और जान सका है. हमें भी उसको ही करके सदगुरु की शरण में जाकर जब तक हम उस तत्वों का अन्वेषण नहीं करेंगे तो हम उस परम रहस्य को नहीं पता कर सकते. उसके लिए हमें गुरु की शरणागत लेनी है, उनके आदेश को मानना है. जैसे एक शिष्य का धर्म है अपने गुरुदेव का कीर्तन करना, अपने गुरुदेव का चिंतन करना, अपने गुरुदेव की भक्ति करना, उसका अभ्यास करना. तो जब तक हम 16 तत्व का समावेश नहीं करेंगे तो हमें उस
परम तत्व का नहीं पता चलेगा। बोल सदगुरु भगवान की जय। मोरे राम मोरे राम सतनाम तुही सतनाम। पहली नमन गुरुदेव को बीज गुणपत राय, तीजी नमन मां शारदा ने मन भूलन ज्ञान बताए। तो सतगुरु जय सुमिंदर नहीं इस तीन लोग के माही, भवसागर में डूबता तो गुरु पकड़ लिए बाहें। तो ये तन विष की कोथड़ी गुरु अमृत की खांड, शीश दिए तो गुरु मिले तो भी सस तो जान। तो 7 दीप नौखंड में और गुरु से बड़ा न कोई, करतार करे सुना होवे मेरा गुरु करे सोवे। तो गुरुदेव से निराला कोई और नहीं, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं। बेड़ा पार लगाने वाला और नहीं, बेड़ा पार लगाने वाला और नहीं। गुरुदेव से निराला कोई और नहीं, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं। बेड़ा पार लगाने वाला और नहीं, बेड़ा पार लगाने वाला और ये गुरुदेव से निराला कोई और नहीं। એવી વાણીનો અહીંયા કણે પ્રસ્તુતિ કરી કે જેણે કમ્પોઝિંગ કરી છે ને જેનો આ સિગ્નેચર ભજન હતું, એક પહેચાન હતી। હું કોઈ બીજા મતમાં નહીં લેજો મારી વાતની, પણ સત્ય એ સત્ય છે અને સત્સંગમાં ઉભા રહીને સત્ય તો બોલવું આપણું ધર્મ ફરજિયાત છે। કે ગુરુજી તમે આટલા વર્ષોથી અહીંયા નહોતા, તમારા પાછળ તમારા શીખાડેલા બચ્ચાઓ બાબુલાલ રામજી ચૌહાણે આ ભજનને સત્સંગને એટલો સારો સુંદર પ્રસાદ આપતા હતા કે તમારી ઝલક એક અમને અણસાર તમારો જોવાતો હતો। પણ હું આજ બી કહેવાનો કે ગુરુજી જે ઠેરાવ જે કાળજાઓની જે પાવર હાઉસ જે બાબુલાલ ભગતજીના મુખેથી આ ભજનમાં દેખાય છે, હું દાવેથી કહી શકું છું કે ભગતજી જેટલું પ્યારું આ ભજન કોઈ નથી ગાઈ શકતા। હું हरदास भाई मेरी बात को गलत नहीं लेना, मगर हकीकत ये है एक लगनियो, एक मुरली, एक आ અને એક વાણીજી પોતાની કેસેટમાં પણ હતું જગત में संत गुलाबी फूल। गुरुजी मैं आपको ये गाने बगैर सुने बगैर कनाडा नहीं जाने दूंगा। बोला सदगुरुदेव की जय। अब हमारे बीच बहुत सारे और ये ऐसा वातावरण कभी कभी मने एक बहुत खुशी से काका તમે ઘણા વર્ષો બાદ આવ્યા અમારી સત્સંગમાં એક ઘડી ઘડી એક મંત્ર બોલવું પડે છે, ભાઈ શાંતિથી સાંભળો, બાયુ બચ્ચા સાંભળ। પણ આજ દેખો તમે ગુરુજનને એની સેવા કે આજ કોઈને એ નથી કહેવું પડી રહ્યું કે ભાઈ શોર નહીં કરો, શાંતિ। આવા માણા જોઈ પબ્લિક જમા કરવી મોટી વાત નથી।
पब्लिक तो घनी जमा थी जाइए के लान में माणा अब नहीं बोलता। धन्य है आप लोगों को कि ऐसी सत्संग बनाए रखी है। अब मैं लक्ष्मण भाई जिप्सी को बुलाऊंगा। उनसे पहले मुझे यहाँ से मैंने यहाँ आगरा महिलों के लहर तारा धाम सी संत शिरोमणि जे हाजर से गादीपति छे कबीर सत्य कबीर सेवा समाजना इंटरनेशनली ग्लोबली जे ऑपरेट करी रहा छे, जे संचालन करी रहा छे आ कबीर धामનું લહેરતાણા ધામથી અર્થનામ સાહેબ ઓનલાઈન છે। એ કાંઈ પોતાના શબ્દોથી આપણને પ્રસાદ આપવા માંગે છે તો હું હરદાસભાઈને કહી કે જલ્દીથી અહીં ઘણા પ્રવચન સંભળાવી દઉં। ઓનલાઈન છે તો લક્ષ્મણભાઈ પછી સત્સંગ શરૂ કરે। આવી જાઓ। रे ना रे ना रे रे तो प्रथम गुरु मनाई के प्रथम गुरु मनाई के और गुणपति ध्यान धरू कंठ विराज सरस्वती तो दीन हाथ धरू। माइक्रो तो नमो नमो गुरु में और नमो गोसाई छोटे लाल शाह नमो नमो गुरु बाबा पहला दिशाने तो मुरियान बंधावो धीर तो तीरथ मिले के फल तीरथ मिले फल और संत मिले फल चार सतगुरु मिले अनेक फल तो कहे कबीर विचार तो साधु तीरथ रूप तो साधु तीरथ रूप और दर्शन पुण्य की खान सतगुरु दर्शन जो करे हृदय बसे भगवान। कबीर साहब की वाणी के ऊपर जो विषय चल रहा था कोशिश करते उसी विषय के ऊपर कुछ भजन कीर्तन हो। ये अपना अपने जाना रे साधु भाई अपना अपने जाना रे हो अपना अपने जाना रे साधु भाई अपना अपने जाना रे हे अपना आप में देखा अपना आप में देखा अपना आप पहचाना रे हे अपना अपने जाना रे साधु भाई अपना अपने
जाना रे। हे अपना आप में देखा, अपना आप में देखा, अपना आप पहचाना रे। हे अपना आपने जे जाना रे साधु भाई, अपना आपने जे जाना रे। મને ભગતજીએ કાંઈ પોતાની ઈચ્છા દર્શાવી. બાબુલાલ ભગતજી કાંઈ વાત કરવા માંગે છે, માઇક માંગી રહ્યા છે તો હું એમને આપીશ. પણ હવે ગાયકી માટે પહેલાં તો હું જગદીશભાઈ મોહનભાઈ મહંત શ્રી જગદીશભાઈ મોહનભાઈ પરમારને વિનવીશ કે મંચ પર પધારે. અને એ બાદ મૂલચંદ પંડિત જે છે પોતાની તૈયારીમાં રહી. सत्संग का मज़ा जब आता है थोड़ी ज्ञान गोष्ठी भी होनी चाहिए। संत कबीर कहते हैं कि आवो संतो गुष्ट करे, खाली हो तो और भरे। तो मेरी सत्संग से प्रार्थना है, खास करके दयाल साहब, मोजीराम बापू, अमर सिंह भाई और रतिलाल और सर्वे संतों के गुणीजन से मेरी प्रार्थना है। अभी एक बच्चे ने भजन गाया, लक्ष्मण ने भजन के पहले एक साखी बोली है, तीर्थ में फल एक है, संत मिले फल चार, गुरु मिले फल अनेक है, कहे कबीर विचार। तो मेरी संतों से प्रार्थना है कि जरा इसके ऊपर रोशनी डाले कि तीर्थ में फल एक है, कौन सा फल है? संत मिले फल चार, कौन से फल है चार भाई? और गुरु मिले संत अनेक है। तो गुरु के मिलने से संत अनेक है, फल अनेक है, तो थोड़े उसके भी बता दो, क्योंकि मैं कहने में जाके सब भूल गया हूँ। तो जरा उर्दू में कहते हैं कि मुझे दर्श दे, मेरी कोई भूल हो तो फिर याद ही आ जाए। खासकर दयाल बापू, मोजीराम बापू, अमर सिंह भाई, रतिलाल महाराज, आप लोग से प्रार्थना है, आप लोग गुरुजन हैं, तो मुझे थोड़ी शांति दीजिए। जय गुरुदेव। ચાલો ભગતજીએ પોતાની જિજ્ઞાસા એક દર્શાવી. જ્ઞાન ગોષ્ઠી બિલકુલ સત્સંગનો એક હુસ્ન છે, એક રંગ છે, અને એમાં પોતે એવી પોતાની અરજી કરી દયાલ સ્વામીના ચરણોમાં. તો ગુરુજી બોલ સદગુરુદેવની જય. કે ભગતજીએ નામ કેનું લીધું? જે એમનાથી શીખેલા છે અમે. હવે એમને દેખી દેખીને અમે સત્સંગ માણી છે. और એમને બહારલ એમનો ભાવ જે છે, સત્યનો ભાવ છે कि तीरथ गए फल एक है, फिर संत मिले फल चार, गुरु मिले अनेक फल है न? गुरु મળે છે પછી તો જેવા ફલ માંગો એવું મળશે, લેकिन આ ચાર ફલ ને એક ફલ કયો છે. તો મારી મતિ और સંતોના વિચાર દ્વારા હું વાત કરી કે तीरथ गए फल एक. अगर આપણે કોઈ तीर्थ धामમાં या ક્યાંય भी हरिद्वार गया बद्रीद्वार सोमनाथ गया तो આપણી વૃત્તિમાં ચેન્જિંગ આવી જાય જરૂર. આપણી વૃત્તિમાં પરિવર્તન આવે છે ક્યારે કે જ્યારે તીર્થમાં ગયા તો અહીંયા શું જોઈ છે? સંતોના દર્શન કરી. સંતોના દર્શન કરી તીર્થમાં, કેમ કે તીર્થમાં સંતે જ મળશે, કોઈ ભગવાન કે यहाँ बैठा નથી. यहाँ तो બધી પથ્થરની મૂર્તિઓ છે અને તીર્થમાં, લેकिन સંત દ્વારા એ પરમાત્મા સંતોમાં વસેલો છે. તો यहाँ દ્વારા મળે છે. तो कैसे तीर्थ गए फल एक है, फिर संत मिले फल चार. अगर यहाँ कोई एवा संत આવી જાય છે और એ એમના से આપની ગોષ્ઠી થાય છે તો એ ચાર પદાર્થ દીએ છે. જે ચાર પુરુષાર્થ છે
ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ આ ચાર પથારત છે. ધર્મ શું કે તારું પોતાનું ધર્મ શું છે અસલી, પૂર્ણ ધર્મને જાણવું. ધર્મનો અર્થ શું છે, ધર્મ એનો અર્થ કરે છે. પછી કામ, ધર્મ અર્થ પછી કામ ઉપયોગમાં કેમ કરવું છે, કેવી રીતે કરવું છે. અગર એ કરી લેવો તો પછી મોક્ષ તો છે જ ને. જ્યારે તો આ ચાર લેકિન ગુરુ મળે છે કે છે પછી મનવા ચિત્ત ફલ માંગો, જી માંગતા હો. ગુરુ મળી જાય ને એ સંતે જ ગુરુ મળી જાય. ઓર આ તમને પછી તો કોઈ ફલની આશા જ નથી, જે ફલ ચાહો એ હાજર થઈ જાય ને. કેમ કે ગુરુ પાસે તો કેવલ મોક્ષ ફલ છે. એ મોક્ષમાં જ્યારે આવી ગયા તો પછી બીજા ફલની આશા શું છે. આ મારી મતિ અનુસાર મેં વાત કરી છે. બાકી જે આગળ હોય તો સંતો લોક બેઠા છે. મોજીરામ બાબુ કંઈ બોલશો? ગુરુજી પોતે આટલા વર્ષો બાદ કાંઈ ઈચ્છા ધરાવી છે તમારા મુખેથી જ્ઞાન પ્રસાદ લેવાની? ગુરુજી બે શબ્દ. જય ગુરુ મહારાજ સદગુરુજી. બાબુલાલજી ભગત અમારા વડીલ મહાન, હુકમ છે આપનો. દયા રામેજી વાત કરી, આની અંદર આપણે કાંઈ કણી કાઢી નથી શકતા કે આમાં કોઈ ભૂલ છે. સંત લોક પાસેથી એ તો કહે છે કે સંત મિલે ફલ ચાર, પણ સંત લોક પાસેથી એક સંત મળે છે ત્યાંથી ચાર ફલ મળી જાય છે. તો ચાર સંતના કેટલા થયા? 16. જ્યારે હું તમારા ચરણોમાં આવી જાઉં ત્યારે તમારા મુખથી નીકળશે એ શબ્દોને તમે દેખજો, ગણજો કેટલા થાય છે. બેટા ભગવાન સુખી રાખે 1, ભગવાન તારી સહાયતા કરે 2, ગુરુ મહારાજ તને સંતોની સેવામાં રાખે 3, ગુરુ મહારાજ તારી આયુષ્માન કરે 4. એક સંત મળવાથી આ 4 ફલ મળે છે. હવે બાકીના જે 3 ફલ છે એ અમારા ભગત શ્રી બહારથી આવ્યા છે, એમનું સમજાવે તો અમને જરા આનંદ આવી જાય. આ વાત કોઈ ગુરુજનોના લીએ આ વાત નથી. જે મારા પ્રેમી મિત્રો, મારા યુવા પેઢીના જેટલા સભ્યો છે, આ મેસેજ એ લોકોના માટે છે કે એક વ્યક્તિ સમુદ્રમાં ઉતરેલો છે સાહેબ, અને કિનારામાં ઉભો રહીને હું પૂછું કે ભાઈ ગહેરું કેટલું છે, તો એ બિચારો સમુદ્ર વાળો મને એ છે કે ભાઈ તું અંદર આવી જા તો તને ખબર પડી જવાનું સાહેબ. તો જે વ્યક્તિ જ્યાં સુધી કિનારામાં ઉભો રહીને પૂછશે તો એને ગહેરાઈનો અનુભવ નહીં થાય સાહેબ. તો જ્યાં સુધી તમને ઉતરવું પડશે સાહેબ, તમને આધ્યાત્મિકની ગહેરાઈમાં ઉતરવું પડશે તો ઈ ભેગ, ઈ પરમ તત્વ એની અવશ્ય જાણ થાય. અને સંતોએ તો આમ બતાડેલું છે, પણ અનુભૂતિ સ્વયંની છે સાહેબ. પોતાની અનુભૂતિ વગર પાર પાવી નથી શકતા સાહેબ. સાહેબ કબીર ધર્મદાસજીના ઉપદેશ દીધા કહી છે, ની અક્ષર નિજ નામ આ ઈશારો છે સાહેબ. ની અક્ષર નિજ નામ અને નિજ નામ નિજ શ્વાસા, कहे कबीर धर्मदास को तहाँ हमारा वासा, तहाँ हमारा वासा. હવે અહીંયા પૂછવા બેઠી કે ભાઈ કેમ વાસો છે, અહીંયા આપણે એમ પૂછી દે, એવા પ્રશ્ન થાય તો સાહેબ કહી છે કે બાત कुछ कहने की नहीं. અહીંયા તો એમ પૂછી કે ભાઈ કેમ વાસો છે. अरे बात कुछ कहने की नहीं, अरे सतगुरु शेन लिखाता है. अरे गाए कबीर मस्ताना वो तो आपे आप समाता है, आपे आप समाता है. तो જ્યાં સુધી વ્યક્તિ સ્વયં એ આધ્યાત્મિકની ગહેરાઈ જ્ઞાન બહુ કરો, જ્ઞાનનો કોઈ પાર નથી સાહેબ. પણ ગુરુ માથે ધ્યાન રાખો, ગુરુના વચનોનું ધ્યાન રાખો તો જ્ઞાન સ્વયં ઉપલબ્ધ થાય. હે આજ મારે આનંદ લીલાવર તાણી, હે આજ મારે આનંદ લીલાવર તાણી,
बायू रे अरे बेनी मुने भीतर सतगुरु मड़िया बता हमारा मंत्र है हम सा होई सोले बता हमारा मंत्र है हम सा होई सोले शब्द हमारा कल्प तरु जो चाहे सो दे मैं मर जीवा समुद्र का डुबकी मारिए मैं मर जीवा समुद्र का डुबकी मारिए मुझ लाया ब्रह्म ज्ञान की जामे वस्तु यने हरि डुबकी मारे समुद्र में जाए निकसाकाश वैकुंठ तो खाली पड़ा साहेब संता का वो भी आप समाया यहाँ भी आया कि भीतर सतगुरु मरिया जब संत सत्ता माता में पहुंच जाता है तो स्वयं को ईश्वर बनाने लग जाता है लेकिन उस ब्रह्म तत्व को जानने के लिए आकार की बहुत जरूरी है संसार के करतारे का आकार न होता क्योंकि उस तत्व को तो अपनी पहचान तो करानी थी नहीं कि मुझे कौन जानेगा कि मैं इसी धुंधका में पड़ा रहूंगा तो उसके पास ये दो चीजें पहले से मौजूद थी इस जीवात्मा और प्रकृति अपनी आनंद के लिए अपनी पहचान के लिए उसने शरीर धारण किया गुरु के रूप में तो महात्मा कहते हैं ओ भाई राजू हेलो तो उसका ये संसार भी संसार न होता क्योंकि उसके पहचान तो करानी है
कि मैं कौन हूं, कि कौन हूं मैं कौन हूं, मुझे जानता कोई नहीं, मौजूद हूं हर जगह, पहचानता ना कोई। संसार के करतार का तार न होता, संसार के करतार का तार न होता, तो उसका ये संसार भी संसार न होता, तो उसका ये संसार भी संसार न होता, संसार के करतार का तार न होता। सतगुरु हम पर रीझ कर किया एक प्रसंग, बादल बरसा प्रेम का, भीग गया सब रंग। गुरु को कीजे बंदगी, अनकोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। होते आनंद आनंद भजन में, होती आनंद आनंद, होते आनंद भजन में, होती आनंद आनंद। बरसत शब्द हो, बरसत शब्द अमी के बादल, भीजत है कोई संत भजन में, होती आनंद आनंद भजन में, होता आनंद आनंद। अगर वास जहाँ तत्वों की नदिया, मानो 18 गम। अगर वास जहाँ तत्वों की नदिया, मानो 18 करिया स्नान मगन होई बैठो, करिया स्नान मगन होई बैठा, चले शब्द को रंग भजन में, होती आनंद आनंद, होती आनंद आनंद भजन में, होती आनंद आनंद। बरसत शब्द अमी के बादल, बरसत शब्द अमी के बादल, भीजत है कोई संत भजन में, होती आनंद आनंद। सद्गुरु ने चरणी नमो, हाजी सतगुरु ने चरणे नमो, और मांगो प्रेम प्रसाद।
दया करी मुने दीजिए हो मारे हरि अमृत प्रेम सवार। जी गुरु सासा मरे तो जाई जन्म जी गुरु जो सासा मरे तो जाई जन्म कहे लाल करुणा थी मरे आत्मानु सुख। हो मेरे रोगी भया सतवचन का हो मेरे रोगी भया सतवचन का मेरा हल्का भया है आनंद का मेरा हल्का भया है आनंद का। सतवचन कारे मेरा हल्का भया है आनंद का मेरा हल्का भया है आनंद का। गंगा नाया तो गोमती नाया गंगा नाया तो गोमती नाया एक मता नाया तेरे मन का गंगा नाया तो गोमती नाया एक मता नाया तेरे मन का एक मता नाया तेरे मन का मेरा हल्का भया है आनंद मेरा हल्का भया है आनंद का। त्रिकमतनमा प्रगटिया त्रिकमतनमा प्रगटिया अनय खंड भया जवाड़ा तिमर हता टली गिया रे भावे भजे रे मदा तो प्रेम प्याला पीजिए
प्रेम प्यारा पीजिए सदगुरु के प्रताप से, रस पीता रविराम के लिए मारा मटी गया जोग तक। प्यालो दो सतनीर कुंडियामा सतनीर कुंडियामा चालो दो जो कौन पिए गुरु श्री धनीधर्म दास साहेब की जय। हजूर श्री उदित नाम साहेब की जय। हुजूर श्री मुकुंदमणि नाम साहेब की जय। गुरु श्री जीवन दास साहेब की जय। गुरु श्री विठल दास साहेब की जय। आज के आनंद की जय। सत्यनाम 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 बोल जय करुणा मैं सत्यनाम बोल। हाँ पूरा करो तुम अपना बोल जय करुणा मैं सत्यनाम बोल। पूरा करो तुम
अपना बोल जय करुणा मैं सत्य नाम बोल सत्य नाम बोल जय करुणा मैं सत्य नाम बोल जय करुणा मैं सत्य नाम सत्य नाम बोल जय करुणा मैं सत्य नाम बोल जय करुणा मैं सत्य हाँ घट घट में वो बसे निरंतर घट घट में वो बसे है निरंतर घट घट में वो बसे निरंतर घट घट में वो बसे है निरंतर कर तो जय करुणा मैं सत्य नाम सत्य लेकर जय करुणा मैं सत्य नाम सत्य नाम बोल जय करुणा मैं सत्य नाम जय करुणा मैं सत्य नाम वचन हमारा सुधाय रूप वचन हमारा खुदा रूप वचन हमारा रूप वचन हमारा सेवक संतो करो ने विचारा सेवक संतो करो ने विचारा नाम की महिमा है अनमोल जय करुणा मैं सत्य नाम नाम की महिमा है अनमोल जय करुणा मैं सत्य नाम सत्य नाम बोल जय करुणा मैं सत्य नाम जय करुणा मैं सत्य नाम पर हंता करे किलोल जय करुणा मैं सत्य नाम आरती ना लिए बधाई आवी जाए बधाई की प्रार्थना से कि आरती ना लिए आवी जाए विघन करे सत्यधामी विघन करे सत्यधामी त्रिभुवनपति स्वामी साहेब जय जय सत्य कवि जयति जयति कबीर नाशक भवभीडं साहेब नाशक भवभीडं धार्यो मनोज शरीरं धार्यो मनोज शरीरं शिशुवरधवतीनं साहेब जय जय सत्य कवि सत्य नाम तत सुखरत ततरत कामी साहेब ततरत कामी विघन कले तजधामी विघन कले तजधामी त्रिभुवनपति स्वामी साहेब जय जय सत्य कवि कमल पत्र पर शोभादित कहते साहेब शोभादित कहते निराचर पर राजित निराचर पर राजित
मुक्तामणि जय साहेब जय जय सत्य कबीर। ए सत्य नाम तक सुखारत तरत कामी साहेब तरत कामी विघन फले सत्याधामी विघन फले सत्याधामी त्रिभुवनपति स्वामी साहेब जय जय सत्य कबीर। परम मनोहर रूपम प्रमोदित सुख राशि साहेब प्रमोदित सुख राशि अति अभिनव अविनाशी अति अभिनव अविनाशी काशी पुरवासी साहेब जय जय सत्य कबीर। ए सत्य नाम तत सुखारत तरत कामी साहेब तरत कामी विघन फले सत्याधामी त्रिभुवनपति स्वामी साहेब जय जय सत्य कबीर। हंस उबारण कारण प्रगटे तनधारी साहेब प्रगटे तनधारी पार करूप बिहारी पार करूप बिहारी अविचल अविकारी साहेब जय जय सत्य कबीर। साहेब कबीर की आरती अगणित अगारी साहेब अगणित अगारी धर्मदास बलहारी धर्मदास बलहारी मुझे मंगलकारी साहेब जय जय सत्य कबीर। कहते आरती करूं मैं तुम्हारी कहते आरती करूं मैं तुम्हारी ए मामलिन साहेब हमारी मामलिन साहेब हमारी कहते आरती करूं मैं तुम्हारी मेले पे जातन तारा जातन तारा मैं मेला रे गुण गाऊं तुम्हारा मैं मेला गुण गाऊं तुम्हारा कैसे आरती करूं मैं तुम्हारी कैसे आरती करूं मैं तुम्हारी आजो प्रभु दे हो ओ प्रभु दे हो तब हम पड़े साहेब नाम तने तब हम पड़े साहेब नाम तने कहते कई गंगा कहते आरती करूं मैं तुम्हारी कहते आरती करूं मैं तुम्हारी। साहिब बंदगी। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ परम पूज्य हमारे पिताजी और मेरे गुरु समान दाता भी हैं। अपना जीवन का हिस्सा आधी ज़िंदगी जो है वो जीवनदास साहिब के साथ और श्री सत्य सेवा समाज के अंदर ही गुजारा है। तो इस वक्त हमारे साथ बापूजी है और आज जो है वो जीवनदास साहिब की तीसरी पुण्यतिथि है। तो हम बापूजी से हमारे गुरु समान दाता से पूछते हैं कि आज के उपलक्ष्य के अंदर वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। और सदगुरु कबीर साहेब की जय। आज के आनंद कीजिए। जीवनदास साहेब हमारे पाकिस्तान के बहुत सुलझेले संत थे, जिनकी परंपरा आज आप देखने मांग रहे हो कितने अच्छी तरह लोग चल रहे हैं और उन लोगों ने सत्य का पैगाम दिया है। वो पैगाम पे जितने शिष्य लोग हैं वो चल रहे हैं और मैं उनके साथ 50 साल से मैं सत्संग मेरी हो रही है। पूरी हिंदुस्तान पूरे पाकिस्तान के साथ मेरे साथ उनको जोड़ते और मेरे गुरु भाई थे वो। और ऐसे इंसान बहुत दुनिया में बहुत कम आपको नसीब होएंगे। तो जीवनदास साहिब के बारे में इतना कहूँगा कि संत ऐसे जाते तो नहीं हैं, मगर हमारे साथ ही रहते हैं, मगर ऐसे संत जाने से सत्संग को काफ़ी कमी महसूस आती है। तो मैं जितने भी मेरे प्रेमी लोग हैं
इनसे आनंद करूँगा, मैं बोलूँगा कि भाई ऐसे संतों की सेवा में हर टाइम रहना जाए। और धन्यवाद इन सेवा मंडल को, आज की जो हमारी सेवा मंडल थी उनको बहुत अच्छा कार्य करे, इतनी सी जो साहिब की बना रहे हम तिथि, और ऐसा प्रेम रखे कि जितने भी बच्चे हमारे हैं ऐसा प्रेम रखे और आनंद रहे। जय हो सतगुरु। साहिब बंदगी। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ श्रीमान मनसुख दास नाथालाल नारोला है जो कबीरपंथ से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत अच्छे सेवाधारी है। जीवन दास साहिब के साथ और इस सत्संग के साथ अच्छा अपना समय बड़ा अच्छा गुजारा है। इस वक्त जो है वो तीसरी पुण्य तिथि हमारे महंत श्री जीवन दास साहिब के उपलक्ष्य के अंदर महा उत्सव की सत्संग रचाई गई थी। तो मनसुख दास साहिब से हम आज के विषय के बारे में पूछते हैं। साहिब बंदगी। बोले सदगुरु देव की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय, 4 गुरु वंश 42 की जय। यहाँ पर उपस्थित सारे संत महंत गुरुजन माओं बहनों को मेरी तरफ से साहिब बंदगी। हम श्री सत्य कबीर सेवा समाज और ख़ास तौर पर मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ जो आप लोग आज आए और हमारे इस गुरु जी के पुण्य तिथि में हिस्सा लिया। और सबसे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए ये थी कि हमारे पंथ श्री 1008 अर्धनाम साहिब ने भी हमारे सर पर हाथ रखा। इससे हमें बहुत खुशी मिली इस बात से। और मेरे साथ सारे सेवाधारी जितने भी हैं, मैं इनसे हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रेम भाव से रहो और अपने गुरु के मैसेज को आगे पहुँचाओ। यही हमारा धर्म है। जितना हो सके कबीर साहिब का नाम ऊंचा होता है तो वो हमें करने में कोई चूक नहीं करनी चाहिए, भले से हमारा नाम पीछे हट जाए। और मैं सारे गुरुजनों से ये प्रार्थना करूँगा कि जितना हो सके अपने शिष्यों को लेकर सबको एक करने की बात करें, ना कि उसमें कोई ग्रुप बनाएं या कोई ऐसी चीज़ें करें। इससे धर्म का पालन नहीं होता, इसमें फूट पड़ती है धर्म में। तो मैं कोशिश करूंगा सारे गुरुजनों को हाथ जोड़कर विनती करूंगा। मैं तो एक छोटा सा बालक हूं, वैसे तो मेरी आयुष्य 60 साल की है, लेकिन मैं सत्संग के लिहाज से मैं बहुत छोटा हूं। मुझे कुछ भी नहीं पता मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मैं आभारी हूं हमारे नरोत्तम दास साहिब के, मेरे चाचा हैं ये, इन्होंने बहुत उपकार किया। ऐसी सिचुएशन में भी वो आए और 3-4 घंटे बैठे, और अभी भी सत्संग ख़त्म होने के बावजूद भी वो बैठे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है इनको देख के। मैं अपने पिता श्री नाथालाल मंगल नारोला को इन्हीं में देखता हूँ। और किस्मत की बात यह है कि इनका जो चेहरा और जो कुछ इनका है वो मेरे पिताजी से बहुत ज़्यादा मिलता है। तो कई दफ़ा मैं इस तरह से देखता हूँ तो मुझे एकदम से मेरे पिता याद आते हैं। मैं कहता हूँ मेरी उम्र भी इनको लग जाए ताकि इसी तरह हमारा सत्संग हरा भरा रहे। साहिब बंदगी। साहिब बंदगी। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ श्रीमान प्रकाश नाथालाल नारोला साहिब है जो श्री सत्य सेवा समाज की जो है वो सेवाधारी है। आज के उपलक्ष्य के अंदर जीवन दास साहिब की जो है तीसरी पुण्य तिथि के उपलक्ष्य के अंदर प्रकाश दास साहिब जो है वो क्या मैसेज देना चाहते हैं? बोल सतगुरु देवनी जय, बोल सतगुरु कबीर साहिब की जय। मैं ज़्यादा तो नहीं, केवल इतना कहूँगा हमारे महंत 108 गुरु श्री जीवन दास साहिब के लिए कि साहिब मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो उबार। बस प्रार्थना हमारी ये है कि हमारा ये संगठन और श्री सत्य कबीर सेवा समाज कराची पाकिस्तान की एकता इसी तरह से बनी रहे। श्री हमारे गुरु श्री नरोत्तम दास साहिब रवि भाई, इनका हाथ हमारे सरों पे रहे, इनका साथ और सहकार हमारे साथ बना रहे। इसी तरह से हम सदगुरु की और हमारे गुरु श्री जीवन दास साहिब की सत्संग करते रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बोल सदगुरु देव की जय। साहिब बंदगी। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ श्रीमान विजय गोविंद बामर राशा जो है वह सेवाधारी है। आज के उपलक्ष्य के अंदर जो पूरी संस्था और वाघेला परिवार की ओर से जो है महोत्सव की सत्संग का आयोजन किया गया था। पूरी सत्संग जो सुबह से लेकर अभी तक जो है वो अंत तक पहुंची है, अभी आखिरी का समय है। तो विजय भाई से आज के उपलक्ष्य के बारे में सत्संग के हवाले से मैं पूछना चाह रहा हूँ। साहिब बंदगी। आज की जो सत्संग थी वो बहुत ही अद्भुत थी। बहुत से कलाकार आए और जो कबीर साहिब की आरती हमने की, जो जीवराज साहिब की जो तिथि थी आज, वो तिथि के बारे में जो भजन कीर्तन हुआ बहुत ही अद्भुत और बहुत ही प्रसाद अच्छा हमें लगा। और यानी कि धन्य है
साहिब बंदगी। धन्यवाद। गुरु गु अंधियारा जानिए, रूह कहे प्रकाश, मिटी अज्ञान ज्ञान दे, गुरु नाम है ताज। देखने वाले तमाम सब्सक्राइबर को, यूट्यूब चैनल को लाइक करना और प्यार करने वालों को एक वारंवार मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से कोटि कोटि बंदगी साहिब। और आज का जिस तरह से आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम देखा, पूरी सत्संग का देखा, हम चाहते हैं और इसको लाइक भी करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।